Yes, hello, Amber, Ananya, Daman, Manogna, Firnaj, Athira, Sakshi, Vaisak. Are you there? Am I audible? Just 2 minutes, we'll start. Anyway, am I audible? यहाँ पर है. हाँ, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? पब्लिक फंडिंग डिस्कस किया था और उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म, दो ही चीज डिस्कस किया ना. ओके, क्या चैलेंजेस है इसी के पास? And then we talked about committees and commissions for the electoral reform. Can you tell me the names of the committee reform? Yeah. And then Bohra committee reform. Yeah. Indrajit Gupta committee report. Yeah. Venkat Chalaya committee report. Yes. Law commission report. Very good. Second ARC report. These are the committee or commissions, which recommended electoral reforms. What are the major electoral reforms that has took place, in the last 3-4 decades? There are many. You can write here that, election commission has followed several measures for reform. नहीं, अभी बताता हूँ. Just wait 1 minute. Right. Major electoral reforms are following. पेन कहाँ पे है? Are following. आज डेट कितना है? Major electoral reforms are following. अच्छा, क्या क्या रिफॉर्म हुआ है? कुछ आइडिया है आप लोग के पास? मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या क्या हुआ है पिछले 30 इन द लास्ट 30 इयर्स? 2-3 चीज तो पॉलिटी में भी बताया मैंने, राइट? इफ यू रिमेंबर. क्या चीज? Commissions, yeah. So multi-member commissions, right? So commission has been transformed from one member to, right, proxy vote. नहीं, मैंने आपको पॉलिटी में कुछ चीजें बताई है. You remember PUCL case, PUCL versus Union of India case? 2 cases I have told you. One was about nota, and other was about the affidavit submitted by the candidate about their background. That PIL was also filed by the PUCL. ये बताया था ना कि PUCL filed affidavit in the PIL in the Supreme Court, and then Supreme Court directed the Election Commission to demand an affidavit which includes 4 things about the candidate. Yeah, criminal background, very good. Educational background, then liabilities, yeah, then properties, yeah, assets. That is also one reform, right? Then other is nota, none of the above, right? Then what are the other reform? EVM, yeah, EVM was introduced. So लिखे थोड़ा सा कुछ लिखते हैं, पहले लिखते हैं, right, nota, right, nota जो ऑलरेडी हमारा है. Page number 3. Yeah. So
Yeah, it was used. It was introduced by the Election Commission. After getting direction from the Supreme Court of India, from the Supreme Court. Okay, when first time nota was used, can you know the year when the first time nota was used? Yeah, in 2003 first time nota was used. 90 कहां पर? नोटा अभी की बात है, 2003 में तो केस फाइल हुआ है, राइट? फर्स्ट टाइम इट इज यूज्ड, first time it is used first time it is used in a state election of Chhattisgarh. Chhattisgarh, right? Madhya Pradesh, Mizoram, Delhi, and Rajasthan in 2013. 13 में हुआ है नोटा का पहली बार यूज, 2013 में हुआ है फर्स्ट टाइम यूज. नाउ कैन यू टेल मी, जो नोटा का वोट होता है, is it counted in the total number of valid vote? No. Nota vote is not counted as a total vote polled. नहीं होता है काउंट. नोटा का वोट बिल्कुल हटा दिया जाता है. हाँ, कोई बात नहीं, हम उसको काउंट ही नहीं करते, राइट? ऑफ कोर्स नोटा पे डिबेट है whether nota should be there in the, in the that ballot box or not, right? Should it be available to the electorate or not? But what will happen, when, for example, if there is a candidate A, B, C, D, but there is a more on nota. For example, nota has received 5,000 and A has received 3,000, B has received 2,500, and C is lower than the, right? What would be the result of that constituency? Of course, A. This will not be counted in the valid vote poll, right? And वो जो C, D, E, F जो है, उसका सिक्योरिटी जो forfeited हो जाता है, उसमें इसका टोटल वैलिड वोट पोल नहीं काउंट होता है. एक होता है ना, एक नंबर तक आपको वोट सिक्योर करना है, अदरवाइज योर सिक्योरिटी विल बी टेकन अप बाय द, तो नोटा वोट को काउंट नहीं होता है. चैप्टर नंबर 75 मैंने बोला था कल पढ़ने के लिए, 75 ही है, राइट? मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म, फाइन. 73, yes. Now second is, the second is introduction of the EVM. Introduction of EVM, electronic voting machine. It was the most contested issue, right? So when first time EVM was used? 73rd chapter, yes, Amber. When the first time EVM was used? 1998, right? Partially it was used first time for Rajasthan, MP and Delhi. Partially, but fully it was used first time in the entire state of Goa, right? So you write it was basically provision बहुत पहले आया था, provision आया था 90s के आसपास ही, but first time it was used in 1998 partially
in the state of MP, Rajasthan and Delhi. It was used first time in the state of MP, और क्या बोला था मैंने, MP, Rajasthan and Delhi, right? In few constituency. In few constituency, right? In 1999, yeah, time नहीं लिखा ना? No, constituency in 1998. In 1998, right? In 1999, it was used for the entire state of Goa. Goa. Third, you can write elector's photo ID card. Elector's photo ID card. आपको पता है 90 से पहले फोटो आईडी कार्ड नहीं हुआ करता था इलेक्शन कमीशन में. Someone is asking, sir, don't you think that not voting is better than the nota? You know, the issue is a contested one. There is no clear yes or no, nota is good or nota is bad, right? There are different perspectives, right? What if people, go and vote nota more than the candidate? What does it reflect? People don't have faith in the candidate, and candidate has no connection with the people, right? But it will also, lack that. It will also fuel to the fire in the distrust of the people towards the democracy, right? And it will have its own consequences. Supreme Court has directed, right? And then, Election Commission has accepted. Reason because civil society group was filing, to the PIL, to the Supreme Court. Okay, there should be some, we have right to vote, but none of the above, none of the candidate is suitable for our democracy. So you must send our message to the candidate that neither of you are eligible to rule us. नहीं, नोटा का पता चलता है कितना वोट, पता क्यों नहीं चलेगा? नोटा का वोट पता चलता है, right? So not voting is not a good thing. It's better to vote, either to vote nota, right? Right? Because what is right to vote? It is an assertion of citizenship. It's not, right? You are reclaiming your citizenship on that day of election, right? It ensures political equality, at least when the rich, poor, men, women, all, stand up in a queue and vote. Okay, Vaishak? ठीक है? So, yes, Amber is saying, I think voting nota is far better than not going for vote. This will check the functioning of the pyramid. Yeah. Fine. नाउ पहले इलेक्शन, आपने कोई मूवी देखी होगी, पर मैं हमेशा मूवी का नाम लेता हूं. एक मूवी का नाम है दामुल. या मैं तो सोचा भूल गया, नहीं तो याद आ गई मुझे. दामुल है, प्रकाश झा डायरेक्टर का नाम सुना है? उसकी पहली मूवी है दामुल, राइट? और उसमें गांव, विलेज, माइग्रेशन, जेंडर, इलेक्शन सब दिखाया है. पहले नहीं होता था और एक इंसान 10 बार वोट करता था. अभी भी अब बहुत चेक हो चुका है. पहले क्या होता था कि लो कास्ट को, स्पेशली बिहार, यूपी में लो कास्ट को वोट नहीं करने दिया था. आपने गया वोट और साड़ियां लाया करती थी. महिलाओं को एक साड़ी पहना के वोट किया, फिर आई, दूसरा साड़ी पहना दिया,
फिर से वोट की। तीसरी, और महिलाएं थोड़ा सा वो ऊपर से घूंघट, कोई बोल नहीं सकता कि घूंघट खोलो, राइट। हाँ, वो 10 नाम पे आके वो करती थी। मेल क्या करता था, कभी बाल कटवा लिया, राइट, वो वोटिंग करके आया, मान लीजिए 5-7 बार हो गया उसका, अगर पहचान गया वो बीएलओ, वो तुरंत हट जाता है। वो सब जुगाड़ होता है। अगर बीएलओ ने पहचान लिया तो वो क्या करता था, बाल कटवा लिया, ठीक है, और अपना चरित्र बदल ले, जैसे नाटक में होता है ना, अपना कैरेक्टर बदल के और जाता था। और फिर आपको पता है कि जहां पे इलेक्शन होता है वहां हर पार्टी के वो होते हैं। तो उस मूवी में दिखाया कि अरे फलाना मिश्रा, तो जाता है, बोला अरे ये फलाना मिश्रा, ये फलाना मिश्रा कब का मर गया, हाँ तुम वोट कर रहे हो। Will election be considered or reflected? What, sir, if nota is in majority? If what, if nota is in the majority, what does it signal? Someone has asked, sir, what if nota is in majority? So if nota is in majority, candidature will not be cancelled. The most secured, we know, the electoral law. We have first past post the system for the assembly election, for the parliamentary election, and for the local election. So those candidates who will secure the majority of the votes will declared as a winner, right? So, but if nota gets majority of seats, a majority of votes, then it will signify, it will reflect something. Is nota a negative vote? You talk about, is nota a negative vote? Do you think that? Does nota reflects some negativity? No, it's basically, it checks sometime. If nota votes are increasing, it means the candidate at least will be aware of the fact that people are not liking anyone. Exactly. So when you see, political awareness एक रीजन है नोटा का वोट इंक्रीज होने का, नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस हो गया, लोगों को पता चल गया कि कोई होप नहीं है इस कैंडिडेट से, तो जा करके वोट कर दिया। ठीक है, आपने कितने भी मूवी देखा होगा जहां पर एमपी एमएलए को खूब पिटाई कर रहे हो, राइट? नहीं, पान सिंह तोमर किसी ने देखा है? पान सिंह तोमर में क्या बोलता है कि अरे तुम तो डकैत हो, तो बोलता कि मैं तो रिबेल हूं। रिबेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्रोही, विद्रोही नहीं, विद्रोही तो हाँ, इस इधर मिलते हैं, रिवराइन को उसने क्या वर्ड बोला था, हाँ बागी तो इसमें मिलते हैं, यस बागी तो बिहार में मिलते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में, सुना है ना ये, राइट? और वो शौक हो जाता है, वो पूछता है कि अच्छा तुम तो डकैत हो, बोला कि डकैत पार्लियामेंट में है, मैं तो बागी हूं, मैं तो रेबेल हूं। Anyway, photo, electoral photo I card, you write, electoral photo I card, then इतना ही काफी है। फोर्थ लिखे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, disqualification of members of the candidate if they violate National Honor Act. Have you heard about National Honor Act? फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाते वक्त मैंने याद बताया था आपको, नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अगर आपने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग किसी का भी डिसऑनर किया तो आपका कैंडिडेचर खत्म हो सकता है। पता है कौन एक बड़ा पॉलिटिशियन जिनका कैंडिडेचर खत्म हो गया था? 6 years he was banned for 6 years. He was a big leader. His son was a Maharashtra chief minister few months ago, Bala Saheb Thackeray. Bala Saheb Thackeray was banned
from candidature for the 6 years, right? Anyway, so this is again one. Now, fourth, fifth, you write? Yeah. Reconduct of election in case of public booth capturing. Reconduct of election in case of बूथ कैप्चरिंग. मान लीजिए बूथ कैप्चरिंग हो गया. आपको पता है बूथ कैप्चरिंग क्या होता है? बूथ कैप्चरिंग शुरू कहां हुई थी, किस स्टेट में? बिहार में. बूथ कैप्चरिंग वहीं पे उनको दिमाग लगा कि इनका पूरा का पूरा सर मतलब पैकेट ही उठा लो. पहले पैकेट में होता था ना, आज भी पैकेट में होता है. अब तो ईवीएम पूरा मशीन है, पहले वो एक डब्बे में होता, अलग अलग मशीन. नाउ इलेक्शन कमीशन बहुत 3 सेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हैज बिकम टू स्ट्रांग, राइट, एंड टू एक्टिव. एनीवे, नाउ देन prohibition of sale of liquor. दो चीजें, prohibition of arms and sale of liquor. आप कोई भी आर्म्स नहीं रख सकते. सेल ऑफ लिकर. अच्छा, ये लिकर कितने देर तक प्रोहिबिट होता है? 3 days? No, 48 hours. Right? Liquor cannot be sold and bought just before 20, cannot before the 48 hours of the ballot, 48 hours of the polling day. वो मिलती तो उस दिन तो एक के बदले 3 मिलती है, उसके बाद 500-500 रुपया होता है. सब इतना ठाठ में रहता है उस दिन और उसके आसपास के दिन. हाँ, अच्छी. The vulnerability is that when political party or the leaders of political party convey the electorate कि आप सबसे लेना, पैसा सबसे लेना, वोट मुझे ही देना. राइट? अरविंद केजरीवाल जब ये नई पार्टी खड़े कर रहे थे तो मैं उनके रैलियों में जाया करता था. रैली इसलिए नहीं जाता था कि मैं उनका मेंबर था, मैं रैली स्टडी करने के लिए जाता था कि पॉलिटिकल रैली को कैसे कंडक्ट करते हैं, राइट, और कैसे अरेंज करते हैं. पैसे मिल जाते तो हम रख लेते थे, वो बात अलग है. ठीक है, मिल जाते तो वो रख लेते था, वो बात अलग है. बट लेट मी टेल यू, अरविंद केजरीवाल बोलता था कि आप सबसे पैसे लो, वोट हम ही दो, क्योंकि हम ईमानदार है और सब बेईमान है. राइट? तो पौवा सबका रखो, वोट आप. राइट? सो मैंने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सबके साथ काम किया हुआ है. एज ए रिसर्चर आई वाज फाइन. क्या यार, इलेक्शन के टाइम पे सबकी खातिरदारी होती है. मैं तो रिसर्चर था, कोई पहुंच गया ना उसकी भी बहुत खातिरदारी होती है. राइट? क्योंकि उस दिन बहुत मतलब कुछ दिन तो उनका जो एमएलए और या एमपी होता है ना, उनका दिल ऊपर नीचे ऐसे करता रहता है. राइट? क्या होगा, तो ऐसा खातिरदारी तो करते, अदरवाइज भी खातिरदारी करते. आप जाओ किसी भी एमएलए काउंसलर के पास अपना ये लेकर के, तो 5-7 लोग बिठा के रखते हैं. फलाना लोग वो कुछ काम दे के रखते हैं. कुछ लोग आधार कार्ड बनवा रहा है, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कुछ लोग कुछ और डील कर रहे हैं. जैसे आपको स्कूल में एडमिशन चाहिए या हॉस्पिटल में आपको एडमिट नहीं हो पा रहा है, एम्स में दिखाना है और एडमिट नहीं हो पा रहा है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो वो भी करवा देंगे. एमएलए सारा काम करवा देंगे. ठीक है, दे मैनेज ऑल द वर्क, सब करवा देंगे. फोन उठाएंगे, हाँ मैं एमएलए बोल रहा हूँ फलाना, राइट, आप ये फलाना जी जा रहे हैं, आप भी कर दीजिएगा. भले ही काम हो भी जाते हैं लोगों के, काम नहीं भी होते, ऐसा भी होता है. लोग 4 बार एमएलए के पास घूम के 5वीं बार गाली देता है कि मैं इतने बार जाता हूं, ये काम नहीं करता है. ऐसा भी होता है. एमएलए आपके आगे पीछे घुमाता रहेगा और कभी ना नहीं बोलेगा. अच्छे लीडर की ये खासियत होती थी, वो कभी ना नहीं बोलता है, हमेशा आपको होप देगा. राइट? एनीवे,
So provision of arms and sale of liquor, then और क्या है, deputation of election commission, deputation to election commission, for registration, preparation, correction of electoral rolls and to conduct election. अच्छा, इसका क्या मतलब है डेपुटेशन टू इलेक्शन कमीशन? नाउ ड्यूरिंग और जस्ट बिफोर द election commission issues a letter to all, right? To all means all government officials to come on deputation, right? Even school teachers, हाँ BLO, जैसे बढ़ता जाता है वैसे उनकी वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जाती है, सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं कहाँ पे, इलेक्शन में, and they conduct election, and they all are the staff of election commission during that day. All the government officials are recruited or as a deputation, right? Posted as on deputation, and they are all member of the election commission during the election, right? For 10 days or for 7 days, depends on the election commission how many days they need to recruit on deputation. Then come to next one. सर की मेरी जान पहचान नहीं है, आज मैं जाऊंगा मुझे पहचानेगा भी नहीं. हाँ, वो जो लोग बोल रहे कि सर की जान पहचान बहुत है, मैं वहां पॉलिटिकल पार्टी से गया ना मिलने के लिए, दैट वाज माय वर्क, दैट वाज माय रिसर्च वर्क, दैट वाज माय ड्यूटी, राइट? एजुकेशनल ड्यूटी. अदरवाइज पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टूडेंट अगर ना जाए पॉलिटिकल पार्टी से ना मिले, सॉरी, I wrote 2 papers on Aam Aadmi Party in 2015. ठीक है, हाँ, कोई both factors. Now, अच्छा, next is holidays for employees. For employees on polling day. On polling day, it is a holiday, so that each person can go and vote, right? सर गवर्नमेंट ऑफिशियल को वोटिंग राइट नहीं होती, किसने कह दिया? क्यों नहीं होती है भाई? आर्मी, हाँ, पोस्टल वोटिंग होती है, आर्मी के पास वोटिंग होती है, BSF के पास वोटिंग होती है, सबके पास वोटिंग होती है. Okay. Now next is 8th है ना, 9th, right? Declaration of candidates assets, right? Educational liabilities, और क्या criminal background, and educational background, and educational. अच्छा, समझ में आ रहा है नहीं क्या पॉइंट लिख रहा हूं? It means the candidate has to declare his or her educational background, liabilities, assets and liability, assets, liabilities, criminal background and educational background. पूछना है नहीं? हाँ, सॉरी,
Yeah, it comes to the public. Yeah, election commission submit actually upload it to the election. Yeah, election commission website. You can know about your candidate, right? You can compare कि कौन छोटा क्रिमिनल है, कौन बड़ा क्रिमिनल है, right? और कौन बड़ा करोड़पति है, कौन छोटा करोड़पति है. सब करोड़पति होता है. Generally, सब करोड़पति है, right? Political party, there's a one book. उसका टाइटल है किताब का एलीट पार्टीज एंड पुअर वोटर्स. बताया था तारिक तैचुल का, राइट? तो पार्टीज हमारे यहाँ बहुत रिच है. एनीवे, नाउ देन रिस्ट्रिक्शंस ऑन एग्जिट पोल. Restriction on exit poll, you know, during election. आपको पता है एग्जिट पोल क्या होता है? What is the exit poll? Yeah, exactly. It is basically estimates which party is coming to power, right? Now, अब ये एग्जिट पोल कब से शुरू हो जाता था? आपको पता है कि इलेक्शन डिफरेंट अलग अलग फेजों में होता है. सो फर्स्ट फेज से शुरू हो जाता था, राइट? अब क्या है कि अब जो एग्जिट पोल अभी भी है, बट एग्जिट पोल can be displayed just after the completion of the election, not during the election. So restriction on exit poll during the election. After election, exit poll can be. What is opinion poll? Have you heard about opinion poll? What is difference between exit poll and opinion poll? अगर मान लीजिए आ जाए, नहीं आएगा नहीं सर. सॉरी, ओपिनियन पोल में पब्लिक इंक्लूडेड रहता है, जैसे आम सबका देखा है. और ये एग्जिट पोल में क्या होता है? एग्जिट पोल में भी लिया उसी से जाता है, बट ओपिनियन पोल में ये रहता है कि पहले होता है एग्जिट पोल में जो एग्जिट पोलिंग जो होती है वो तो दिखा देते हैं टीवी पे और एज इलेक्शंस आर गोइंग ऑन तो पैसे डिस्प्ले तो करते रहते हैं. नो opinion poll can be held at any point of time, whereas exit poll can be held only after the election, right? So for example, before election there can be opinion poll conducted by a party or any organization, right? Opinion poll means the opinion of the public. कहते हैं ना पब्लिक मूड किधर जा रही है, बीजेपी को कि कांग्रेस को कि, राइट? इवन पार्टी भी अपना कैंडिडेट ये करते हैं. आपको पता है आईपैक क्या है? ये प्रशांत किशोर का नाम सुना है? प्रशांत किशोर यू नो ही इज IITian. उसके बाद शायद IIM किया है, क्या किया है. नाउ ही first he worked with BJP in 2014, then he shifted to Congress, then he shifted to Nitish Kumar, then he shifted to TMC, right? So he manages opinion poll, right? सारा चीज आपको बताएगा कैसे करना है, नहीं कैसे. He called himself a electoral strategist, right? कैसे जीतना है तो उनसे पूछिए, right? Now he's struggling to establish a political party in Bihar. Anyway, ओपिनियन पोल इलेक्शन से पहले होती है. बिल्कुल सही बात है नितिन. ओपिनियन पोल कभी भी हो सकती है, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, मतलब बीच में भी, कहीं भी. एग्जिट पोल हमेशा इलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन एग्जिट पोल हो सकता है, उससे पहले नहीं. पहले होता था कि रिजल्ट आने से पहले भी एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल हो जाता है लास्ट फेज के बाद से. लास्ट फेज के जिस दिन का लास्ट फेज होता है उसके बाद उसी दिन शुरू हो जाता है एग्जिट पोल शाम में. पहले क्या होता था, इलेक्शन के बीच में ही भी एग्जिट पोल शुरू हो जाते थे. एनीवे, नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट. Introduction of VVPAT. What is VVPAT? VVPAT, yeah, it's a voter verifiable paper audit trial. You know, ये करता क्या है वीवीपैट? क्या काम होता है? आपने जिसको वोट दिया है उससे एक पर्ची निकलेगी. एक्चुअली बहुत इल्जाम लगाया गया बीजेपी के ऊपर.
It's a voter verifiable, the voter verifiable paper audit trial. Voter verifiable paper audit trial that was attached with EVM. That जैसे मान लीजिए आपने बीजेपी को वोट किया तो बीजेपी का ही टिकट आना चाहिए. एक्चुअली बीजेपी, हाँ, बीजेपी पे ये एक्यूजेशन लगा कि लोग कोई वोट कहीं देते हैं, जाता है बीजेपी को. आफ्टर 2014 बीजेपी फेस सो मेनी एक्यूजेशन, राइट. हाँ, कि सारा वोट बीजेपी इलेक्शन कमीशन मैनेज कर रही है, राइट. फिरनाज है, हाँ, फिरनाज है, राइट. तो वोट हम झाड़ू पे डालो वोट जाएगा. इवन आम आदमी पार्टी ने पूरा का पूरा शो किया, राइट, कि वोट कहीं पे डालो बीजेपी पे जाएगा, राइट. तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि एक वीवीपैट, इट्स कॉल्ड वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, राइट. इट वाज अटैच्ड विद ईवीएम, राइट. एंड इफ यू वोट टू आम आदमी पार्टी, देन आम आदमी पार्टी का वो आएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, टेल मी, if a person is in jail, can he contest election? If a person is in jail or the police custody but he is not convicted, अब मैं पूरा क्लियर कर देता हूं. If a person is in jail, right, or police custody but not convicted yet, can he contest election? Yes, they can. राइट. हुआ क्या कि पटना हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि इफ अ पर्सन इज इन पुलिस कस्टडी और कन्विक्टेड, नो, इन जेल बट नॉट कन्विक्टेड, इवन देन ही कैन नॉट और शी कैन नॉट कंटेस्ट. तब होता क्या, रूलिंग पार्टी क्या करती, सबको अरेस्ट, मेजोरिटी को अरेस्ट करवा देती इलेक्शन से पहले, तो सबका कैंडिडेचर वैसे ही खत्म हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा. when the person in jail or police custody can contest election, right? But if person is convicted, then his candidature can be cancelled, right? So you write this: a person in jail or police custody can contest election, but the convicted one not. Convicted one not. कन्विक्टेड लोग नहीं इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते. सर वीवीपैट से फिजिकल टिकट मिलता है. यस, यू आर राइट, राइट. आपको पता चलता है कि आपने वोट किसको दिया है. नाउ पर्सन इन जेल, वीवीपैट हो गया, नोटा हो गया, एग्जिट पोल का काम हो गया. अच्छा, वोट थ्रू प्रॉक्सी, व्हाट डू यू मीन बाय इट? देयर आर वन अमेंडमेंट, ये होगा 13 ना, वोटिंग थ्रू प्रॉक्सी. ये क्या है? ये आम, ये देखिए, इट इज अवेलेबल, फॉर आर्म्ड फोर्सेस. यस, वेरीफाइड. वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है अब पूछ रहे हैं? वीवीपैट का है, हाँ, गूगल कर लो यार, सबसे आसान काम है. थोड़ा खुद भी मेहनत करो, बहुत आराम से मिल जाएगा. ठीक है. नाउ वोटिंग थ्रू प्रॉक्सी, इट इज अवेलेबल फॉर आर्म्ड फोर्सेस, राइट. मान लीजिए कोई सियाचिन में है, वहां पर पोलिंग स्टेशन बैठाना बहुत डिफिकल्ट है. देन क्या होगा? या समवन अदर विल वोट on the behalf of that armed personnel, right? Sir, previous slide. Yes, Harsh, you write it. स्विच ही बंद कर दो ना, नहीं है क्या स्विच इधर उधर? हाँ, हो गया.
Simple. Done? Okay. Okay. Now, और क्या है रिफॉर्म क्या हुआ है इफेक्टिव हाँ now अब if you look at the campaigning, what is campaigning period for a state assembly or national assembly? No, इफेक्टिव कैंपेनिंग होता है, उस बीच में आप पद यात्रा भी निकाल सकते हैं, अलग अलग जगह रैली भी कर सकते हैं, अदरवाइज पूरे 5 साल कैंपेनिंग मोड में होती है पार्टी तो नहीं, 14 डेज नाउ, पहले 20 डेज था, अब 14 डेज, इट इज 14 डेज नितिन, अदरवाइज पार्टी और लीडर तो हमेशा कैंपेनिंग मोड में ही रहते हैं, नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन इफेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड जो है वो 14 डेज का है, लेकिन just 48 hours before the election polling day, right? एक चीज है linkages of voter cards, linkages of voter cards, yeah, and Aadhaar cards, ये लास्ट ईयर हुआ है. These are the major electoral reforms, right? Please read chapter number 73, right? कुछ क्वेश्चंस पेटी में भी कभी कभार आ जाते हैं, right? बट कभी कभार एक आध बार आया है. Done. Sir, voting model code of conduct. Model code of conduct is applied throughout, you know. No. Model code of conduct, exactly, it is, you know, it vary because it is a different rule for the ruling party. It has different rule for the electoral manifesto. तो फॉर रूलिंग पार्टी 2 month आई थिंक, थोड़ा देखना पड़ेगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कितने दिन रूल, जैसे फॉर रूलिंग पार्टी है, द रूलिंग पार्टी कैन नॉट अंडरटेक एनी डेवलपमेंटल वर्क यू नो बिफोर 2 months. अदरवाइज क्या होगा, 2 महीने पहले ही, मतलब 10-15 दिन पहले, मतलब या 2 महीने पहले सारा कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं. अब क्या होता है, तो 6 महीने पहले शुरू करते हैं. रूल है 2 महीने पहले नहीं कर सकते आप, अब क्या है 6 महीने पहले करते हैं पॉलिटिकल जो पार्टी है रूलिंग में. हाँ, आपको जितना दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी है वहां पर रोड बनता, आप जाओ कितना रोड बनता मिल जाएगा मात्र 6 महीने पहले. 6 महीने में जितना काम होता है, राइट, सॉरी, हाँ, इट्स कॉमन, इसको बोलते हैं रन अप टू इलेक्शन डेवलपमेंट, यू नो, इन रन अप टू द इलेक्शन. ठीक है, ये अलग चीज है. एनीवे, नाउ I hope this is clear, right? The electoral reform is clear. Now one more thing I would like to tell you, voting behavior. अच्छा, voting behavior क्या है? What is voting behavior? 5-10 मिनट है, 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा. What is voting behavior? नहीं है, हमारे पास टाइम तो बहुत है, आधे घंटे, मतलब ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये टॉपिक. What is voting behavior? अब जो टॉपिक है ना फटाक से तुरंत खत्म होने वाले हैं. What is voting behavior? पब्लिक वोट कैसे करती है पब्लिक वोट? Refers to factors on which people vote, right? Or people make their choice. What are the factors? Voting pattern of the public. Yeah, it is also. What are the factors? Factors which shapes voting behavior. क्या है? हाँ, या फर्स्ट क्या बोला? पार्टी नेम. पार्टी के नाम से वोट हो जाता है क्या? थोड़ा सा ऐसे
social factor, right? Social factors. Yeah. The personality cult, leaders, yeah. Social factors. I'll come to another, that is reverie culture. किसी ने कहा है reverie comes under economic factors. What are the social factors on which people vote in India? There are many factors like caste. मैं लिख नहीं रहा हूँ स्टोरी में, स्टोरी आपको खुद बनाना है. Caste, religion, right? Then language. What are the other factors? Which ethnicity. Then what are the other factors on which people vote? Religion, ethnicity. Yeah. Now if you look at, these are the major factors, social factors on which which shapes the individual voting choice, right? It's called social splits. Called social splits or social cleavages, right? Social cleavages, right? Social cleavages के आधार पर पार्टियां भी बनती है. For example, caste based party. Can you tell me the caste based party in India? Caste based. AIDMK, DMK, RJD, SP, BSP, they are the caste based parties. AIDMK is a caste based party. AIDMK क्या बात करते हो? DMK कास्ट बेस्ड है और AIDMK कास्ट बेस्ड नहीं है, और PMK भी कास्ट बेस्ड है. PMK का फुल फॉर्म क्या है? Anyone from Tamil Nadu? What is the full form of PMK? PMK. Yeah, this party is very active in Tamil Nadu. PMK. फुल फॉर्म देखना कभी ट्विटर या फिर गूगल करके, बड़ा मस्त नाम है. Anyway, now if you look at the social cleavages that are also based, these are the basis of the foundation of political party. For example, if you look at the caste, BSP in SP in Uttar Pradesh, RJD, JDU in Bihar, right? For example, DMK and ADMK in Tamil Nadu. These are the parties which are based on the social cleavages. Now, can you tell me few parties which is based on religion? हाँ, मुस्लिम लीग सब आए. मुस्लिम लीग, ऑफ कोर्स यू आर राइट. मुस्लिम लीग ऑफ केरला. हाँ, वो जो है उसका क्या नाम है? असदुद्दीन ओवैसी. He has two faces. He has different face in the parliament and he has different face in his constituency. AIMIM. Yeah, he is well educated. But he knows now without polarization you cannot get vote. मोदी को लगता है कि मैं लड़ाई करवा दूं, उनको नहीं लगता कि मैं लड़ाई करवा दूं हिंदू मुस्लिम में नहीं, बट उनको वोट ही नहीं मिलेगा जब तक वो लड़ाई मतलब इस तरह से पोलराइजेशन नहीं करेंगे, right? What the mass democracy has brought to us, the mass democracy has brought some dictators, right? And the leaders use ideology, right, to influence people, whether it is a Stalin, whether it is a Hitler, whether it is a Modi ji, or whether it is a Asaduddin Owaisi, right? They exploit the emotions, public emotions, on different things, on different names, right? And they create your enemy, right? वो majority minority में हमेशा लड़ाई करवाएगा, वो तभी तो majority उसके साथ आएगी, right? And each vote is counted in the election. What is democracy? Democracy is the rule of the majority. It's not the rule of the people. It's the rule of the majority, right? The democracy पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया, democracy is a rule by the people. It is a very ideal condition, but democracy is a rule by the majority. Anyway, on religion, there are many parties like BJP itself appeals religion. It is based on Hinduism, right? Muslim League, AIMIM. Yeah, what about Akali Dal?
Is it a party based on religion? Akali Dal religion based party नहीं है? है Sikh yeah है. What about National Conference? वो और एक पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, मुफ्ती जिसका मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जिसकी हेड है. What is that? PDP. Yeah, Vaishak, you are right. PDP. What is SFJ? Vaishak, I want to stay here because kabhi question aa jaye ki this how social split or social cleavages or social factors are the basis or foundation of the formation of political party in India. You could be able to write something, right? This is also shapes voting. What are the parties which is based on language? Any parties which is based on language? Seek for Justice. DMK, if you look at the culture, Tamil, DMK is also party which is based on language, Tamil culture, right? Tamil ethnicity, right? So that even if you look at Marathi party, Trinamool Congress Bangla करता रहता है, but it is not exclusive. नॉन बांग्ला को जब मारे पीते तो वो एक्सक्लूसिव हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस मराठी मानुस जो पार्टी है, चाहे वो उसका उद्धव का हो, चाहे राज ठाकरे को हो, मराठा में है तो महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलना पड़ेगा, राइट? सो व्हेन यू आर emphasizing on this factor, then you are emphasizing language, right? It is a more of secessionist group. JDS, Seek for Justice. Seek for Justice is an international group. It is not a party. Let me tell you, Vaishak, क्या हुआ? हाँ, शिवसेना क्या हुआ? स्प्लिट हो गई. हाँ, तो कौन सा ओरिजिनल पार्टी? अभी कुछ पता नहीं है ना. But who is the parent party? No one. ठीक है, रहने दो उनका. Anyway, now fine. Did you get the idea? This social factor shapes the voting behavior of in India, right? Mota moti. Now, second factors is economic factors. Economic factors. What are the economic factors that influence, that shapes the freebies? हाँ, बोलो. Yeah. हाँ. Yeah. These all caste, religion, language, histories to appeal to people so that they can vote for them. If we have to write so these parties, they appeal the people on the basis of religion, caste, language, ethnicity, so that they can have the votes. नहीं, ऐसा नहीं करते. Party does not appeal caste. For example, if you talk about BSP is talking about assertion of the scheduled caste, right? And caste consolidation, right? And empowering the Dalit community, basically, right? And it has agenda that if we get the power, if we capture the power, we will make some policy that would benefit to the. क्या क्वेश्चन क्या है? So the language that can be used. So that's what I was asking. That these parties appeal to the people on the basis of empower. Different factors. One factor is their associational or prescriptive identity. Exactly, prescriptive identity. For example, Dalit BSP appealed the Dalit community to vote them. Caste is a descriptive identity, right?
हाँ, of course emotions तो है ही, right? Fine. There are different factors. There are, personality cult. If you see the BSP, it has a great leader. मायावती तो है, इनसे पहले कौन था? काशीराम. Kassiram was a great organizer, right? Right. It has it. He had also one, a great personality. He had influenced many organizations within the Uttar Pradesh, right? अब ये है कि sir, how did it happen? The SFJ introduced the Khalistan referendum in 2020 along with the some member of the Akali Dal. I have friends in Punjab who said rallies are held. See, Akali Dal is a political party where some factions of Akali Dal are extremists. It's not, I'm not denying the fact, but we should not accuse the entire Akali Dal as a extremist, right? Akali Dal play politics on the basis of identity. It's right. It's right, but it is also allow other party to flourish. But it has also fundamentalist, थोड़ा सा कुछ है. Bathinda, हाँ हो सकता है. Anyway, now come to the economic factor. What are the economic factors? Pre-distributions, then economic policies, development work, these are the basic economic factors. हाँ हो गया, economic policies में आ गया ना सारे facilities, right? Third is ideology. Ideology also play a very important role in mobilizing people, right? You can give example of the BJP or CPM, right? CPI, CPM, right? Or ideology means right, left, center, right? For example, if you talk about Congress, right? Congress criticizes RSS often, right? So RSS had its own ideology, right? They wanted to make new India, right? Okay. So ideology also factored. Then the next is, leaders and or personality cult. जैसे मोदी वेव चल रहा है अभी तक. My God, this man has really, proved himself. इतने दिन से, जब से चीफ मिनिस्टर बना है गुजराती लोग कैसे हैं? मीठा खाते हैं और मोदी जी को देखते हैं, दो ही काम करते हैं, राइट? मतलब यार, कोई 16 साल कैसे बर्दाश्त कर सकता है एक पार्टी को? रिप्लेस करना चाहिए. 16 साल, कितने साल हो गए? कितने साल से है? 27 साल से. 3 बार, 3 टर्म्स. हाँ, 2 बार पीएम बने. उसके बाद ऊपर भी जाके इन्हीं को राज मिलने वाला है, राइट? सर, कांग्रेस को बर्दाश्त किया. हाँ, कांग्रेस को बर्दाश्त किया, बट कांग्रेस में बाइफर्केशन हो जाता है, तुरंत रिबेल आ जाता है. आपने बीजेपी में दूसरी पार्टी बनती हुई देखी? कांग्रेस इलेक्शन लड़ने से पहले कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, एंड देयर वाज अ न्यू कांग्रेस, राइट, कॉल्ड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, right, that formed in 1948. Have you seen any political party that has been bifurcated from BJP and it has its own existence? कौन? कर्नाटका. वो फिर से आगे मिल गया ना, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता. येदुरप्पा पार्टी, ये आई नो. किसको हटा दिया था? बीजेपी कैंडिडेट को, क्योंकि उसका पर्सनल वहां पे है. बट ही केम बैक. He came back. Yes, उसको लगा कि अब नहीं चलेगा मेरा. Now, this man, Yogi, he's not from BJP. He runs his own organization called Yuva Vahini. Aditi or something Yuva Vahini. Huh? Anyway, so personality cult is another factor. Then what are the other factors? 3M. You all know 3Ms.
money, muscles, yeah, and media power. आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, राइट? पर्सनालिटी भी कौन क्रिएट करता है? Who creates personality? Media. Even Kerala has CPM since last 2 terms. Yes, Vaisak, I agree. Right? Even even if you see the CPM rule in West Bengal, more than 30 years, 30 years CPM ruled Kerala, no, West Bengal. If you look at Tripura, CPM ruled very long time, right? So, and it is called one party government. One party government is not good in anywhere in the world, right? Anyway, now, so these are the factors which shapes voting behavior. Fine. Now I will move to pressure group. Yes, pressure group. What is pressure group? Then tomorrow I'll tell you political party, thoda sa. Coalition government and political party. What is pressure group? अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट को पता करने में? Any issue? Voting behavior means, factors which influence, people to vote. Basically, all Indians are very argumentative and very political, right? If you, पता है मुझे, जी उसको हम हिंदी में अलग से ट्रांसलेट करते थे, राइट? तुम भी जानते हो, राइट? इतना हिंदी नहीं आता है तुम्हें, राइट? इंडियन पीपल्स आर वेरी आर्गुमेंटेटिव, तो हम लोग बोलते थे बकचोद भारतीय, सिंपली, राइट? All Bharatiya, if you go to the all nook and corners, every Indians are very argumentative. उसको सारा पॉलिटिक्स आता है, ये याद रहेगा, right? Since I'm a teacher, I have to make little difference, right? तो मुझे कुछ चीजें ऐसी क्रैक नहीं करना चाहिए, हाँ, right? But it's fine, आपने दोबारा emphasize किया तो मैंने बता दिया. Anyway, so these are the factors which shapes the voting behavior of Indian citizen, right? On Indian voters. चलो प्रेशर ग्रुप. प्रेशर ग्रुप क्या है ये? What is pressure group? So, people who, or a group of people who criticize or critically analyze the working of the government or the present party. Yeah, it is basically an organized group. Very good. Organized group, right? And लिखा है तो group ही S नहीं जोड़ेंगे. Yeah, it is an organized group. What does it do basically? इसके काम क्या करता है? It influences government's decision and policies. Right? It influences government policies, and does it contest election also? So what about RSS? Is it pressure group or is pressure group? Right? Does RSS play contest election? RSS has two faces, many faces of RSS, right? The two face, one is political, but the BJP is a moderate face of
The RSS. Anyway, RSS can be called as a pressure group, right? Because it does not contest election on the name of RSS. It has another branch, right? So BJP is a party. Now, if you look at pressure group never contest election. That is the difference between pressure group and political party, right? Can you tell me, pressure group name? कोई प्रेशर ग्रुप का नाम बताइए कुछ. Yeah, farmers group. Many farmers group. आपने सुना है IS एसोसिएशन के बारे में? There are IS IPS association. Then there are, right. Even जब दुर्गा शक्तिपाल पे जब वो हो रहा था, तब they were very active. Yeah. Of course. What about a student organization? Are they pressure group? Yeah, ABVP and yeah, बहुत ज़्यादा है. Right. Then what about trade unions? What about corporate groups? Corporate groups. सुना है corporate groups का नाम? Have you heard about FICCI? Federation of Indian Chambers and Commerce and Industry. So there are corporate groups. There are many, Acha. So pressure group is an organized group which influences, government decision and policies. There are many, pressure groups like corporate groups, lawyer association, जजों का भी एसोसिएशन होता है. आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स का भी एसोसिएशन है और जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के उनका भी अलग एसोसिएशन है, राइट? Yeah, market association, these are also pressure groups. Market association, right? There are corporate association. Fine. So basically, this pressure groups inhibits the space between the society and the state. Actually, it fills the gap, right? Right? ये करता क्या है? पहले लिख लेते हैं role of the pressure group. Right? Role of the pressure group. ये क्या करता है? Connects or connect society with a state. और दूसरा काम क्या करता है? Put pressure on government. Put pressure on government. अच्छा, ये mobilize भी करता है. Mobilizes people. Does it mobilize? और क्या काम करता है pressure group? Yeah. It educate. Yeah. It gives education to people. Right. It gives education to people about, or it informs the spread awareness. Yeah. Yeah, pressure group, civil society group comes under pressure group. Yeah. Pressure groups under civil society groups comes under the pressure group. Then और क्या काम करता है? Basically, it enhances political participation. It enhances political participation. और क्या करता है? Yeah, it keeps demand from the government. अच्छा, लॉबी करता है? It lobbies with government
एंड कॉर्पोरेट। अच्छा, किसी भी प्रेशर ग्रुप को प्रोपेगेंडा करते हुए देखा है? Have you seen any pressure group who involved in propaganda? Yeah, you are talking. Yeah, so it does propaganda basically. Sometime. कौन? एंटी भी हो सकता है. There are many pressure groups who are anti government और बहुत झूठ बोलता है गवर्नमेंट के खिलाफ. राइट, एग्जैक्टली मिस इन्फॉर्मेशन देता है लोगों को. ये भी तो अच्छा नहीं है ना. सो देर आर इट परसुएट्स पीपल. एक चीज मैं बता देता हूं, ये केवल इलेक्शन नहीं लड़ता है, अदरवाइज सारा काम करता है जो पॉलिटिकल पार्टी काम करती है. एक्सेप्ट कंटेस्टिंग इलेक्शन, प्रेशर ग्रुप्स हैव सेम फंक्शंस एज अ पॉलिटिकल पार्टी. हाँ, ठीक है. Now if you look at the pressure group, there are 4 types of pressure group. We have time? No? अच्छा, लिख लिया क्या काम है प्रेशर ग्रुप का? लिखिए लिखिए. Yes, yes. Sir, what is the last role? Last कहां से? It enhances political participation. It gives education to people. It keeps demand from the government. It lobbies with government and corporate. It does propaganda. It connects, or you can say a vital link between state and society. Right? These are the role of the pressure group. Right? If you talk about there are pressure group, there are 4 types of pressure group. But कल ही इसको करेंगे. 4 types of pressure group. And ये जो चैप्टर नंबर 77 है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा. या लक्ष्मीकांत से. नहीं, गवर्नेंस का ये पार्ट है. ये सब गवर्नेंस डाल रखा है. अभी बताऊंगा. गवर्नेंस का साथ ही है. मैंने 10 बनाए हुए हैं आपको. आई विल, इफ यू वांट देन आई कैन शेयर यू द डिटेल सिलेबस. 8 पेजेस का सिलेबस है. मतलब नहीं चाहिए ना बिल्कुल, तो काहे के लिए आपको चाहिए? हर एक चीज डिटेल्स में है कि इसमें क्या पढ़ना है आपको. टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, उसके सब टॉपिक्स. आई शेयर विथ यू, डोंट वरी. आई विल शेयर विथ यू, डोंट वरी. तो अभी जो है ना, ये गवर्नेंस एंड पॉलिटी दोनों ओवरलैप करता है. राइट, ओवरलैपिंग पार्ट ही है. बट यू कैन नॉट से गवर्नेंस का नहीं है. इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस. देयर आर सम पार्ट व्हिच ओवरलैप्स. ठीक है. इट इज ओवरलैपिंग बेसिकली. मैं आपको गवर्नेंस जब पढ़ाऊंगा, गवर्नेंस की डेफिनेशन, तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नेंस का डेफिनेशन इतना ब्रॉड है कि वो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है. पॉलिटी का डेफिनेशन इतना बड़ा है कि वो भी इसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है. हाँ, आपको हेल्थ आपको पढ़ना है. कल बता दूं. राइट, ऑफ कोर्स. कल थोड़ा ये करा के थोड़ा सा कोलिजन गवर्नमेंट, थोड़ा सा गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया बताना है.